व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्रूट्स एंड इट्स टाइप्स। फ्रूट फ्रूट जो है हमारे पास a ripened ovary of a flower containing seeds is known as fruit। यानी we can define it as a ripened ovary of a flower containing seed is called fruit। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बाज़ क्या होता है कि हमारे पास फ्रूट की डेवलपमेंट जो है विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फ्रूट जो है हमारे पास सीडलेस हासिल होता है। एग्जांपल है हमारे पास सीडलेस ग्रेप्स जो कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं। ट्रू फ्रूट जो है हमारे पास इफ फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम द ओवरी अलोन देन इट इज़ नोन एज ट्रू फ्रूट। अगर सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट की डेवलपमेंट हो तो ऐसा फ्रूट जो हमारे पास ट्रू फ्रूट कहलाता है। फॉल्स फ्रूट्स और सूडोकार्प्स। अगर फ्रूट्स की फॉर्मेशन में हमारे पास फ्लावर के कुछ और पार्ट्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं तो ऐसे फ्रूट्स को हम सूडोकार्प्स और फॉल्स फ्रूट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल थैलमस जो है इन एप्पल एंड पियर, जबकि फिग, मलबरी और पाइनएप्पल में मुकम्मल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट की फॉर्मेशन में हिस्सा लेती है। तो ऐसे फ्रूट्स जो हमारे पास फॉल्स फ्रूट और सूडोकार्प्स कहलाते हैं। पेरिकार्प्स। वाला फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प्स जो कि हमारे पास फ्लैशी, जूसी, हार्ड और ड्राई हो सकती है। पेरिकार्प is differentiated into three distinct layers. Outer one is exocarp, middle is mesocarp, and inner is endocarp. Functions of fruit: protects the seeds, ensure their dispersal, factor in timing their germination, and as a taxonomic tool. These are the some important functions of fruits. Kinds of fruits. हम फ्रूट्स को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं या हमारे पास फ्रूट्स की 3 मेजर अकसाम हैं जिनमें हमारे पास है नंबर 1 सिंपल फ्रूट, नंबर 2 एग्रीगेट फ्रूट एंड नंबर 3 कंपोजिट फ्रूट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। Structure of flower that play important role in the formation of fruit. Number 2, number of ovaries involved in the formation of fruit, number of carpels in each ovary, the nature of mature pericarp जो कि dry या fleshy हो सकते हैं, dehiscent of pericarp यानी splitting manner जो है वो हमारे पास कैसे है, pericarp की जो हमारे पास स्प्लिटिंग है वो होती है या नहीं होती। इफ़ डिहिसेंट अगर होती है देन द मैनर ऑफ स्प्लिटिंग, सेपल्स आर रिसेप्टेकल्स पॉसिबल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द फ्रूट। नंबर 1 सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स जो होते हैं सिंगल फ्लावर से डेवलप होते हैं। इनकी गाइनेशियम जो होती है वो मोनोकार्परली या पॉलीकार्परली हो सकती है जो कि सिनकार्पस होती है। सिंपल फ्रूट्स जो है हमारे पास ड्राई या सक्युलेंट्स हो सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पेरिकार्प होंगे। सिंपल ड्राई फ्रूट्स। Simple dry fruits are classified into 3 main categories. Number 1 achinal, number 2 capsular, number 3 schizocarpic. Number 1 dry fruits जो हमारे पास achinal fruits. These are dry and one-seeded. Indehiscent, that is pericarp when ripe, does not split
open to liberate the seed. Types of achial fruits. The number one is achene, derived from a monocarpally pistil with a superior ovary containing a single seed. अकेन फ्रूट्स कैसा होता है हमारे पास, सिंगल सीड होगा, ओवरी जो है उसमें हमारे पास सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुआ होगा एंड डिराइव्ड फ्रॉम अ मोनोकार्परली पिस्टल. एग्जाम्पल है हमारे पास क्लेमाइटस एंड बटरकप. नंबर 2, कैरियोप्सिस, form of achene in which the pericarp and testa are fused. जिसमें हमारे पास पेरिकार्प और टेस्टा अगर फ्यूज हुए हुए हों देन इट इज नोन एज कैरियोप्सिस. एग्जाम्पल wheat, maize, barley and oat. Nut, pericarp hard and woody forming a shell, partially or completely surrounded by a hard or membranous structure called cupule, formed by the fusion of bracteoles present below the flower. Example, oak, lychee and water chestnut are the example of nut. Number 4, samara, achene in which pericarps develops a membranous outgrowth or wing which help in fruit dispersal is known as samara. Examples, elm and ash. Number 5, Cypsilla. Cypsilla fruit develop from a bicarpally syncarpous pistil with an inferior ovary. In some cases, persistent calyx forms a tuft of hairs called pappus at the top of the fruit. हमारे पास जो सिप्सिल्ला की एग्जाम्पल है वो है सोंकस. नंबर 2, capsular fruits. Capsular fruits may be dry, many-seeded and dehiscent fruits. There are 5 types of capsular fruits. Number 1, legume. Number 2, follicle. Number 3, siliqua. And number 4, silicula. And number 5, capsule. Number 1, legume. Formed from a monocarpally pistil, superior unilocular ovary, dehisces along both its dorsal and ventral sutures. ये करेक्टरिस्टिक्स है लेग्यूमिनेसी फैमिली का. लेग्यूम फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेग्यूमिनेसी. हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे पास पी एंड बीन. follicle. Follicle fruit is formed from a monocarpally pistil, superior unilocular ovary like a legume, but it dehisces along one sutures only. Examples, larkspur and magnolia. Number 3, siliqua. Long, narrow, cylindrical fruit formed from bicarpally syncarpous pistil with superior ovary having 2 parietal placentas. This is the characteristic fruit of the family Cruciferae. Example, mustard and turnip is the example of siliqua fruit. Silicula resembles siliqua except that it is short and contain fewer seeds. ये हमारे पास सिलिक्वा से रिजेंबल करते हैं, बस ये थोड़ा सा शॉर्ट और इसमें कुछ सीड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे सिलिक्यूला कहते हैं. एग्जाम्पल्स, कैंडी टफ्ट
and shepherd's purse are the examples of Silicula. Number 5. Capsule. Capsule fruit develops from a polycarpally syncarpous pistil with a superior ovary. Ovary may be unilocular or multilocular. Examples: poppy, cymbal, datura, hibiscus. Sometimes form from the inferior ovary. अगर ये inferior ovary से हमारे पास बाज़-औक़ात बनते हैं तो उनकी मिसालें हमारे पास हैं आइरस एंड कैम्पेनुला. शाइज़ोकार्पिक फ्रूट. शाइज़ोकार्पिक फ्रूट ड्राई मैनी सीडेड फ्रूट्स होते हैं. ब्रेक्स अप इनटू मैनी वन सीडेड पार्ट्स ऑन ripening. Cocci. If the one-seeded parts are dehiscent, then they are known as cocci. Mericarps. If they are indehiscent, then they are known as mericarps. Types of schizocarpic fruits. Lumentum. Legume modified by the formation of false septa and constriction between seeds are present, then it is known as lumentum fruits. हमारे पास lumentum fruits की जो examples हैं वो कुछ species जो हैं वो leguminosity and mimosa plant में हमारे पास जो fruit होता है वो lumentum कहलाता है. Double samara. Formed from a bicarpally pistil with a superior ovary. Break up into two mericarps, each with a single seed, and is provided with wings. Examples: maple and acer. A samara with 3 wings is called a triple samara. Cremocarp develops from a bicarpally syncarpous pistil with an inferior bilocular ovary. On ripening, it splits longitudinally between the loculi into two one-seeded mericarps which remain attached to the top of central axis called carpophore. This is the characteristic fruit of family Umbelliferae. For example, fennel, coriander are the example of cremocarp fruits. Carcerolus fruit develops from a bicarpally or polycarpally syncarpous pistil with superior ovary. Original loculi are divided into many by the formation of false septa. On ripening, the loculi separate from one another as mericarps. Examples: Labiati, Boraginaceae, and Malvaceae. Ragma. Polycarpally syncarpous pistil with a superior multilocular ovary, having a single seed in each loculus. On ripening, the fruit break up into many one-seeded cocci. हमारे पास रेगमा की जो एग्जांपल्स हैं castor oil plant and geranium are the examples of regma fruits. Simple succulent fruits, very important. The wall of ovary is 3-layered in simple succulent fruits: exocarp, mesocarp and endocarp. One or more layer become fleshy and juicy. That is why they are known as simple succulent fruits. Drupes derived from monocarpally pistil with a superior ovary, usually have one seed. Example: mango, peach, plum, apricot, coconut are the example of drupes. These are fleshy fruits.
simple fleshy fruits. Next is berries. Indehiscent, many-seeded, fleshy or pulpy fruits derived from superior or inferior ovary. Epicarp forms the outer thin or thick skin. Mesocarp and the endocarp are succulent, forming a fleshy pulp in which seeds are embedded. बेरीज की जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं ब्रिंजल, टोमेटो, ग्रेप, पपीता, रेड चिलीज विद सुपीरियर ओवरी. Hesperidum, assigned to the citrus fruit. The walls of laculi bear multicellular juicy hairs on their inner surfaces, forming the edible portion of the fruit. This is the peculiar fruit of the citrus family. Pepo. In the berries like watermelon, pumpkin, cucumber, etc., epicarp and the thalamus forms the peel are rind, whereas the fleshy portion is formed by the mesocarp and endocarp. This is the characteristics fruit of family Cucurbitaceae. Pepo. Pome develops from a syncarpous pistil with a bilacular or multilacular inferior ovary. The outer skin and edible portion of fruits are formed from the thalamus. Central cartilaginous core encloses the seeds developed from the carpels and is therefore pericarp. Example: apple, pear, and locust, etc. Aggregate fruits, a collection of simple fruitlets developed from an apocarpal pistil of a single flower. Itario, aggregate fruit is formed from the numerous carpels of one individual flower. Such collection of simple fruitlets is called an itario. Itario of achenes, group of achenes, example strawberry, buttercups. Itario of follicles, collection of follicles, example calotropis. Itario of drupes, a number of small drupes or drupelets derived from a separate carpels of a flower, grouped together on a conical thalamus. Example raspberry and blackberry. Composite fruit develops from whole inflorescence. Cyconus develops from Hypanthodium inflorescence, then it is known as Cyconus. Example fig and banyan. Sorosis develops from female spike. Examples mulberry and pineapple. Strobilus develops from a cone-like female inflorescence. Thank you very much. Thanks to all of you. Subscribe my channel for further videos.